they directly got placed. But in my case, if you see that I have first cracked Nagaro, then I was a consultant in Morgan Stanley, and then here. So everyone has different journey. So I think whatever you are getting, any opportunity, just go for that. Don't look for the package. The only thing you have to keep in mind that your mindset where you want to go. That should not go down day by day, like which mostly people forgets after 1 year or 2 year. They enjoy with their friends in Bangalore and they forget how, like, what they were aiming for. और अगर मुझे कुछ नया पैटर्न दिखा, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं नोट्स बनाती थी उसका, ताकि लेटर ऑन मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, राइट? आपको कभी ऐसा नया सवाल नहीं दिखेगा, अगर मिलेगा भी तो उसका कुछ पैटर्न ऑलरेडी. So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Anjali who's joining with us for another video. So Anjali, would you like to introduce yourself? Yeah, sure. Hi everyone. So my name is Anjali and I'm 2023 graduate, and right now I'm working in Walmart as an SD. Yeah. So she has cracked Walmart, and like she said, she's a 2023 graduate, which was the year of peak recession. So what was your journey, Anjali, like going through all of this, like learning DSA, learning the skills required to crack such a company? What was your journey like from college? Sure. To be very honest, I was very unaware of like regarding DSA and interviews. So in my 7th semester, basically my 4th year, when my friends were getting placed, then I got to understand that I have to study DSA. And yes, like I was very much active on the elite code then, and I was solving daily problems. If you ask about the count, actually it doesn't matter, like how much you can, you should, because the thing is, like how much frequent you are on the lead code, you will be getting very used to the DSA, and the more you will practice, and the more you will good at that part be. And talking about how I started, so I was choosing easy problems at first, very first. Whenever, let's suppose I was focusing on the linguist part, then I was solving easy problems first. And whatever different type of patterns I was getting, I was preparing notes of that, so that in future I can revise, because DSA is nothing like you will get to know or get to learn in a one go. Obviously everyone forgets, and it is very natural process. So whenever I was getting new patterns, I was making notes, and so on. I have planned my 2 weeks for linguist, and then for trees I gave more time, because DFS and BFS, no, it's not more difficult, but the thing is, it is more like where you have to think a lot. It's not something like, if you talk about the breadth first search, so there are very few patterns. When you will learn about it, you will never forget. But DFS is something like recursion, and mostly people feel difficulty in this. So I think for the BFS part, I have to practice a lot. But at the end, I got placed on campus in Nagaro first. But once I started, I really enjoyed. And seeing your friends at big companies like Amazon or at Recession, like that. And if you are feeling that you can also do, basically. So I think you don't give up so easily, and you don't settle down in the whatever you got, like how I got Nagaro. So I continued my learning, and so here I am. Yeah. So one more issue that people face, like you told me that the recruiter had reached out to you. One more issue that a lot of freshers are facing is that they're not finding opportunities. You know, they keep on applying to multiple companies, but they never get a revert back, and they're not able to find these opportunities. So how would you say what helped you in getting this opportunity for you in this time of recession and all? Sure. So the thing is, obviously, a normal applying on the portals will not help you, basically, because the openings are very less, and the people are mostly applying through referrals. So referrals are all like also very much large what the opening is. So you don't you think that you can get the opportunity if you are applying normally? First you have to apply through like referrals only, and the openings I got to know about from the LinkedIn part, Naukri.com, Insta Hire. There are a lot of different websites there. I think you should like create your account, and you will be getting notifications whenever there will be opening. Okay, and in this recession part, I think you should also try for the walk-in interviews. Okay, it's never like if you don't have any opportunity and you are aiming for the big one, you don't stick to that particular company. Okay, your goal should be to reach there, not to only reach there. And in some cases, like
if you talk about my college friends who got placed directly in the Atlassian, they directly got placed. But in my case, if you see that I have first cracked Nagaro, then I was a consultant in Morgan Stanley, and then here. So everyone has different journey. So I think whatever you are getting, any opportunity, just go for that. Don't look for the package. The only thing you have to keep in mind that your mindset where you want to go. That should not go down day by day, like which mostly people forgets after 1 year or 2 year. They enjoy with their friends in Bangalore and they forget how, like, what they were aiming for. Yeah, and in your case, like you said, the recruiter had reached out to you, you know, so obviously your profile would have something जिसके कारण like recruiter आपको reach out किया होगा. तो क्या advice आप दोगे freshers को कि वो अपने LinkedIn या resume को इतना अच्छा करे कि उनको आगे से reach out आए? Okay. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहले पता नहीं था कि रिक्रूटर जो प्रोफाइल मतलब मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई थी फॉर द रिक्रूटर. सो जो मुझे लगा, मतलब व्हाट आई रियली फेल्ट कि मेरी प्रोफाइल में ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, because of that a recruiter reached me. Before the followers you go, I would like to say, if you check out my profile, you will see that in the background there is my lead code consistency picture is there. So I will not suggest that go and bring anywhere else's screenshot and paste it there. Yeah, because the thing is, when I shared my profile, like my resume to the recruiter, they went and checked the lead code profile. Is it actually there or not, or I just so they actually cross-checked? Yes, actually. So like whatever is your own continuous journey on the lead code, तो आप बस उसका screenshot paste करो. And that the very first thing is lead code consistency, I would say, because वो अब ये नहीं, अब the thing is, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बस डेली एक प्रॉब्लम ऑफ द डे कॉपी पेस्ट करने से भी ऐसा होता है. बट द थिंग, मतलब आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि फिर वो रिक्रूटर इंटरव्यू में देख लेगा कि आपको अगर उतना डीएसए नहीं आता. तो वो खुद के लिए करो. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेरा प्रोफाइल. सेकेंड थिंग वॉज कि yes, the projects I mentioned in my resume, and I was very active on the LinkedIn. तो जैसे जब रिक्रूटर भी आकर आपको सर्च करते हैं ना, तो अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो आप सजेशन में उनके जाते हो. जैसे आपके सजेशंस में आते हैं लोग कि फॉलो देम एंड नॉट, तो आप उनके सजेशन में जाते हो. एंड थर्ड थिंग, जैसे अगर आप वॉलमार्ट, जैसे मैंने जो भी कंपनी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, उनके एम्प्लॉयज़ को तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, साथ ही साथ उनके रिक्रूटर्स को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो. क्योंकि जब आप किसी एक रिक्रूटर को अगर आप कनेक्शन में हो और कोई दूसरा रिक्रूटर अगर फॉलो मतलब हायरिंग कर रहा है, तो आप उनके सजेशन में जाते हो. एंड ऑब्वियसली रिक्रूटर को भी चाहिए कि आप इंटरव्यू क्रैक करो, बिकॉज एवरीवन वांट्स, नो वन वांट टू लाइक रिजेक्ट यू. तो आई थिंक लाइक कनेक्शन रिक्वेस्ट की भी लिमिट होती है, तो आई थिंक उसको वेस्ट मत करो, उसको यूटिलाइज करो. Okay, so one more thing, you're from EC department, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नॉन CS होने से अफेक्ट पड़ता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलने में या रिक्रूटर को रीच आउट करने में? Have you felt like that ever? ओके. सो ड्यूरिंग दी ऑन कैंपस, बिकॉज उसमें मतलब कि लिमिटेशन होती है कि उनको कितना लेना है बच्चा. तो इन दैट केस ऐसा हुआ था कई बार कि हमें जो है बीइंग एन ईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, तो हमें जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट ऑफ कैंपस, बट उस केस में इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, वो भी सिर्फ मैं सच मतलब वो सिर्फ फ्रेशर के लिए होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एनी कंपनी इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल, देन फिर आप किस ब्रांच से हो फिर ये मैटर नहीं करता. सो बेसिकली ब्रांच का रीज़न नहीं है. If someone wants to, they can. So while preparing DSA, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि यार कोई कोर्स ले लो, काफी सारे कोर्सेज लोग प्रेफर करते हैं, कोई कोर्स हो जाए उसी में सब कुछ मिल जाएगा. And you didn't take any paid courses, right? So how was it for you learning without any help, outer help? ओके. सो द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं है. अगर लीड कोड की बात करो या जीएफजी की बात करो, देयर आर डिस्कशन सेक्शन, राइट? सो वो आपको हेल्प के लिए ही होता है. सो पीपल, देयर आर मेनी लाइक कोडर्स जो कि अपना सोल्यूशन पोस्ट करते हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. तो अगर आप मतलब, मैं तो उनका ही कोड देखती थी, और अगर कभी कभी ऐसा होता था समटाइम्स कि कोड पढ़ने के बाद नहीं समझ आया, ठीक है, सो वो ईजी प्रॉब्लम्स में बेसिकली नहीं होता है, बट स्टिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं. कभी मैंने ऐसा सोल्यूशन उठा लिया जो एक्चुअली मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आई विल गो थ्रू 5 or 6 मोर सोल्यूशंस, तो मुझे जिनका भी समझ में आता था, तो मतलब वहाँ से हेल्प लेती थी. और अगर मुझे कुछ नया पैटर्न दिखा, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं नोट्स बनाती थी उसका, ताकि लेटर ऑन मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ,
क्योंकि डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, राइट? आपको कभी ऐसा नया सवाल नहीं दिखेगा, अगर मिलेगा भी तो उसका कुछ पैटर्न ऑलरेडी है। एंड यूट्यूब से भी हेल्प लेती थी। देयर आर मेनी चैनल्स कि अगर आप वहाँ प्रॉब्लम का नाम डालो और इन वॉट एवर लैंग्वेज यू वांट, तो पहले मैं तो डीएसए पाइथन में किया है मैंने, तो मैं अब मैंने जावा में स्विच किया, बट अर्लियर व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग तो पाइथन में किया। एंड पाइथन में डीएसए सबको पता है बहुत इजी है करना। तो यूट्यूब एंड मुझे लगता है यूट्यूब और बहुत सारे आर्टिकल्स, इंटरव्यू बिट्स हो गए, जेएफजी हो गया, एंड डिस्कशन सेक्शन काफ़ी है किसी को भी। मतलब आई डोंट थिंक कि कोर्स, मतलब मुझे तो नहीं ज़रूरत पड़ी, बट सब मे बी कुछ लोग बहुत स्मार्टर होते हैं कि मुझे अगर 6 मंथ्स लगा, उनको 3 मंथ्स लगा, बट कुछ को 1 ईयर भी लगता है, विदाउट सपोर्ट नहीं कर पाते। तो आई थिंक इन दैट केस ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कोर्स नहीं खरीदना चाहिए। इफ़ यू फील यू नीड, आई थिंक यू शुड, बिकॉज ये पैसे का वेस्ट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और अगर सब खुद से सीख सकते हैं तो फिर कोर्स नहीं बन रहा होता। So suppose to the people watching, or if someone comes to you, a fresher comes to you, and उनको भी जॉब चाहिए कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो what advice would you give to them कि वो कैसे स्किल सेट एक्वायर करे कि you know they can get a good job like you did? ओके, सो मेरे कुछ कजिन्स हैं, मतलब भाई बहन हैं छोटे, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो मुझे बेसिकली गाइडेंस नहीं मिला था प्रॉपर, बट मतलब मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप जो भी ब्रांच में हो, इफ़ यू आर एमिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल, तो आपको जो डीएसए है, बिफोर डीएसए आप फर्स्ट ईयर में आप लैंग्वेज सीख लो, English language you want to, Java, C++, Python, whatever you want. And second year से I will prefer कि आप DSA start कर दो, because of that, ऐसा नहीं कि आप लेट स्टार्ट करोगे तो आप कर नहीं सकते, मैंने भी लेट स्टार्ट किया था, बट यू विल बी गेटिंग, यू हैव द चांस ऑफ इंटर्नशिप, जो मैंने लूज कर दिया था बेसिकली। अगर आप पहले स्टार्ट करोगे तो आप इंटर्नशिप मिल सकती है, जिससे कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो पीपीओ में कन्वर्ट कर देती हैं, बेसिकली फुल टाइम ऑफर, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यस, एंड टू whom who are watching, like who already passed their BTech and working in service based company, so उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि the thing is salary obviously सिर्फ जीने के लिए नहीं कमाना है ना, फिर तो लाइक जानवर भी अपना पेट पाल लेते हैं, हमें अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ानी है। एंड उसके लिए एक सिंपल जॉब, आप, इट्स योर चॉइस कि आप उसमें खुश हो या फिर थोड़ा मेहनत करके आप और ऊपर जाना चाहते हो, बिकॉज देयर आर वेरी मच एग्जाम्पल्स आर देयर जिन्होंने टीसीएस और विप्रो में काम करके आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत की है। सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाने से आप कंपनी नहीं चेंज कर पाओगे, आपको अपने काम के साथ साथ आपको डीएसए मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने मॉर्गन स्टैनली में काम करते हुए भी मैंने डीएसए मैनेज किया था, मैंने पढ़ाया भी था, एंड यस, टू देम हु आर एक्सपीरियंस और उनको अगर डीएसए आती है तो आई विल रिकमेंड, जो मुझे बहुत हेल्प हुआ है कि मैंने डीएसए पढ़ाती भी थी, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड द एक्सप्लेनेशन पावर कि जब मैं इंटरव्यू में बताती हूँ इंटरव्यूअर को तो मैं उसी तरीके से बताती हूँ, एंड दे लाइक द एक्सप्लेनेशन पार्ट। फिर आप जो हेजिटेशन होती है ना, जो मॉक इंटरव्यूज देने से आती है, अगर आप पढ़ाते भी हो तो आई डोंट थिंक आपको मॉक इंटरव्यूज की भी जरूरत है। सो आई विल सजेस्ट दैट। So being a 2023 graduate, you've already cracked 2 product-based company, you've already made 2 switches. So do you feel इसका कोई negative connotation आ सकता है, like long-term career पे, if someone looks back on it? Okay. तो एज अ फ्रेशर जब आप किसी भी टेक स्टैक में काम करते हो तो बेसिकली मतलब वी ऑल हैव द राइट कि हम टेक स्टैक चेंज करके देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है किसमें, बट अगर 3-4 साल आप एक कंपनी में रह गए, किसी एक टेक स्टैक पे काम कर लिया, तो आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे, राइट, कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। तो बेसिकली एज अ फ्रेशर आप 2 साल तक एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हो, एंड one of the main reason for me to switch was I was a consultant, as I mentioned, in Morgan Stanley. So for me, job security was less, so that's why I switched. But mostly people also switch for the obviously hike. So the more hike I got now, in coming future I'll be getting like. So also, and the dream company was one of the motivation for me to change. So these were the reason. So yes, it will affect if I continuously change the company again and again. But as I switched from only one company, from Morgan to Walmart, so it won't affect much. Okay, so I think that pretty much covers everything about how to get a good job in a good product-based company. So thanks a lot, Anjali, for coming to my channel, sharing your journey. And if anyone wants any help related to their career or cracking interviews, you can reach to Anjali on her top mate or follow her on LinkedIn.
I'll give everything in description. So thanks again. Thank you, Ashish, for giving me the opportunity to like explain what I have done till now, and I hope that I'll motivate someone. And obviously, for any kind of help, I'll be there. And at last, again, I would like to tell you all that follow his channel, not because to grow, but he really actually, we are also like, we all doing shooting in the weekends, and he actually invests that much of efforts for you guys to help and to let you know the procedure of the interviews, so that there will be no confusion if you are lacking the guidance. So like the video if you like the content, and yeah, thank you so much.